So again function fast Hessian build response layer. Here you pass R1 and fast Hessian data to the function and your output is RL. Now here you step equal to fix R1 dot step. So R1 step is a function. So R1 के अंदर जो भी variable होगा step you fix point. So this is the size of the filter. Then b equal to fix R1 filter minus 1 plus means filter minus 1 by 2 plus 1. This is the border of the filter. So basically you, let's say this is 10. So R1 filter minus 1 divided by 2 plus 1. So basically 10 minus 1 will become 9 by 2, 4.5 plus 1. So it's always be equal to or greater than the border of the filter. Then L equal to fix R1 filter by 3. This is the lobe of the filter. Now here filter size divided by 3. So if you have 3 cross 3 filter, this will divide it and make it 1 cross 1. So it's the innermost lobe of the filter. W equal to fix RL dot filter. This is the filter size you define. Inverse underscore area 1 equal to 1 divided by double W into W. So W is the see, all these variables are not declared here. Basically this W fix RL filter is the area of the filter. Let's say you have W length is around 10, so the area will be 10 into 10, 100. So it's like a square filter. And why you take double of this? Because you want to take inverse. If you take a integer inverse, it will be try to be in integer, and you want it to be a double format. That's why 1 divided by double W into W. So that जो भी डिवीजन होगा, लेट्स से अगर 1 डिवाइडेड बाय 4 होता तो वो 0.25 की जगह उसको 1 या 0 कर देता इफ वी डोंट राइट दिस डबल. So double is changing of data format. Now img fast Hessian data dot em. So now you load the image from fast Hessian data dot image. AC comma AR is ND grid 0 to RL width minus 1, 0 to RL height minus 1. So आप एक करंट पिक्सल AC और AR लोड करते हो जिसमें आप विड्थ माइनस 1 तक सारे वैल्यू चेक करते हो और हाइट माइनस 1 तक सारे वैल्यू चेक करते हो. नाउ AR इक्वल टू AR कॉलन, मतलब जो भी AR मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से कन्वर्ट हो जाता है एक रो मैट्रिक्स में. AC इक्वल टू AC कॉलन, अगेन जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आता है उसको आप कन्वर्ट करते हो रो मैट्रिक्स में. देन R इक्वल टू int 32. सो ये डबल से अलग फॉर्मेट है. int 32 is 32 bit integer format is equal to AR into step and C equal to int AC into step. Basically here you get the image coordinates, which coordinate we are working on of the image. Now compute the response component. So dxx is the integral image box integral r minus 1 r plus 1. So basically ये माइनस 1 प्लस 1 क्यों किया है, ये L है और ये 1 है. सो दोनों में डिफरेंस ये है कि C माइनस बी 2 इंटू एल माइनस 1. तो ये बेसिकली कर क्या रहे हम लोग, जितने भी ये लेट्स से ये पूरा आपका इमेज है, तो उसमें एक छोटा बॉक्स बनाते हैं अपन. सो उसका साइज जो होगा माइनस बॉक्स इंटीग्रल आर माइनस 1 आर प्लस 1 सी. यहाँ पे एक चेंज है फॉर्मूला में, फिक्स हाफ 2 टाइम्स एल माइनस 1 1 कॉमा इमेज. तो यहाँ पे बेसिकली एक बार विड्थ लेते हो और एक बार डब्ल्यू लेते हो और आप लोग उसको बेसिकली सी माइनस फिक्स हाफ करते हो. तो आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, अगर ये टोटल इमेज है तो उसका 1/4 पार्ट लेते हो और उसका एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकाल रहे हो. सिमिलरली डी वाई वाई इक्वल टू इंटीग्रल अंडरस्कोर बॉक्स इंटीग्रल आर माइनस बी सी प्लस 1. सो दिस फर्स्ट टर्म रिमेन्स सेम but only term is now you subtract from r pix, so that becomes dyy. And then dxy, for dxy what you do, the again first term is box integral I minus 1 c plus 1 1 comma 1 image. Similarly box integral r plus 1 c minus 1 1 comma l comma image minus box integral r c image. So ये चारों टर्म एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. यहाँ पे देखो r माइनस 1 c प्लस 1 c माइनस 1 1 r माइनस 1 c माइनस 1 r प्लस 1 c प्लस 1. तो अगर ये आपका करंट पिक्सल है तो r माइनस 1 ये हो जाता है, c माइनस 1 ये होता है. r स्टैंड्स फॉर रो एंड c स्टैंड्स फॉर कॉलम. तो r माइनस 1 मतलब प्रीवियस रो का पिक्सल, c माइनस 1 मतलब प्रीवियस रो का प्रीवियस कॉलम का पिक्सल. तो ये यहाँ से यहाँ जब जाते हो आप, मतलब अगर सेंटर में हो कहीं पे, यहाँ पे अगर हो
तो आप ये इस तरफ जाते हो तो आप रो में पीछे जा रहे हो, और अगर इस तरफ जाते हो तो आप कॉलम में आगे जा रहे हो, क्योंकि आपका इमेज जनरली 1,1 यहाँ से चालू होता है. So once you calculate all these response component, that is dxx, dyy, dxy, then you normalize this component. So you divide by inverse of your area. So that's why you basically whatever dxx you have, you just divide it and make it between 0 to 1, क्योंकि maximum component is equal to inverse of the area. Now get the determination of Hessian response and Laplacian sign. So RL dot response equal to dxx dot dyy minus 0.8y. अब ये हेशियन का स्पेशल फैक्टर है. सो dxy इंटू डॉट dxy, तो ये बेसिकली वेक्टर लेता है और उसका रिस्पॉन्स टाइम कंप्यूट करता है. सो हाउ इट कंप्यूट्स dxx जो भी है, मतलब x माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, पर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.8y, and this comes from the Hessian transform, and then you determine the sign. So L Laplacian equal to dxx plus dy. अगर dxx बड़ा रहा या dy निगेटिव रहा तो बेसिकली ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 इज व्हाट वी चेक फॉर, and this is how this entire function works. So finally what you send is RL, and RL के अंदर हमने दो कंपोनेंट भर के भेजे, एक रिस्पॉन्स और दूसरा Laplacian.